Everyone, this is Alfa Somani. I hope you all are doing well. So, we have already completed one chapter, and today we will start with another chapter, a new one, chapter number 8, One Violet Day. Okay, so as the title of the chapter explains, One Violet Day means a day which was violet, or violet is a shade between blue and purple. So, purplish shade is a violet. So, the chapter is about a day which was violet, when everything in the world was violet. So, we will discuss the chapter in the next class, but today we will start the chapter with the vocabulary, and today we will do the vocabulary part of the chapter. Let's start. First one is imagine. So, what do you mean by imagine? Imagine means what? When you visualize something, when you have something in your mind. So, that is called as imagine. कोई भी चीज की कल्पना करना, that is called as imagining. For example, I imagined myself in short hair. Okay, मैंने अपने आप को छोटे बालों में imagine किया. To visualize about someone, to figure about someone, that is called as imagine. Next one is amazed. Amazed means what? Surprised. Whenever you are surprised by someone, आप किसी चीज से आश्चर्यचकित हो जाओ, हैरान हो जाओ, उसको कहते हैं amazed. For example, I was amazed to see शाहरुख खान in front of me. मैं शाहरुख खान को सामने देख के हैरान रह गई. Next one, reacted. To react means what? To reply, or to react accordingly. React मतलब किसी भी चीज, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका आप रिएक्शन दो, उसका आप रिप्लाई करो. दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिंग. ओके, टू बिहेव, आप कोई भी चीज की प्रतिक्रिया देना, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, when my parents came to my home, I reacted in a very joyful manner. जब मेरे पेरेंट्स मेरे घर पे आए तो मैं बहुत खुशी से मैंने रिएक्ट किया. Next one is surprise. Surprise means what? When you are wonder, कोई भी चीज से आश्चर्यचकित रह जाना. Okay, किसी भी चीज को whenever you are wondering, अरे ये कैसे हो गया? तो surprise means, surprise, आश्चर्यचकित रह जाना. That is called as a surprise. For example, to see my parents in my home. मैंने parents को अपने घर पे देखा तो मैं surprised रह गई. Is blue jay. Blue jay means what? It's a type of bird. एक तरह की चिड़िया. Blue jay is a type of North American bird. For example, I saw a blue jay flying in the sky. Next one, overnight. Overnight means what? Puri raat. Okay, puri raat. Over a duration of a night, over the whole night. So that is called as overnight. For example, I was working overnight. मैंने पूरी रात काम किया. Next one is messy. When something is very dirty, when something is not clean, that is called as messy. कोई चीज बहुत गंदी हो, when something is not clean, that is called as messy. Her room is very messy. उसका room बहुत गंदा है, उसका room बहुत messy है. Next one, you can use this word messy. It's a very common word which is used these days, and you can also use it. Okay. For example, your room is messy. आपका room जो है वो बहुत messy है, बहुत dirty है. So you can use the word. Okay. So we are learning this vocabulary, children, so that we can use these words in our daily language, in our regular language. Okay. So just try incorporating these words in your daily life. So messy is a very common word, and you are going to use it. Okay. Next one is tallest. So tall means ऊंचा, highest. Okay, and tallest means which is highest of all. सबसे ऊंचा is called as tallest. For example, Burj Khalifa is the tallest building in Dubai. Okay, so Burj Khalifa दुबई के अंदर सबसे लंबी building है. Next one, skyscrapers means what? एकदम आकाश को छूती हुई इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जिसे बोलते हैं. when sky buildings which are touching sky. okay, ऐसा तो नहीं है कि जो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि आसमान को छू जाएगी, लेकिन इतनी ऊंची ऐसा लग रहा है कि आसमान को छू रही है. ओके, दे आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज स्काई स्क्रेपर्स. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज फिल्ड विद स्काई स्क्रेपर्स. मुंबई में बहुत ज्यादा लंबी लंबी इमारतें हैं, बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं. ओके, skyscrapers are the types of building which are very high, which are very tall. Next one is tiniest. Okay, tiniest. Tiny means what? Small. And tiniest means what? The smallest of all.
Okay, सबसे छोटा is called as tiniest. For example, the tiniest creature was affected by the rains. जो छोटा से छोटा जानवर था वो भी बारिश से उस affected हुआ, बारिश का उस पे असर हुआ. Next one is wondering. Okay, wondering means what? सोचना, to think about something. Okay, curiously किसी बारे में सोचना. That is called as wondering. So for example, I was wondering if it will rain today or not. मैं सोच रही थी कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. Next one is dreaming. Dream means what? Sapna. And dreaming means what? Sapna dekhna. Okay. Next one is, for example, I was dreaming. I was dreaming that I will get a gold bangle. Okay, मैंने सपना देखा कि मुझे एक गोल्ड की अंगूठी मिली, बैंगल मिली. Okay. Next one is accept. Accept means किसी को छोड़ के, तो हम कहते हैं accept. Except Ram, everyone in the class was wearing a tie. राम को छोड़ के पूरी क्लास ने टाई पहन रखी थी. Okay. So except someone means किसी को छोड़ के. Okay. Next one is disgusting. Okay, disgusting means very disgusting. जब कोई चीज बहुत घिनौनी हो, जब कोई चीज बहुत खराब हो, you say that is disgusting. Okay, for example, the food at the restaurant was very disgusting. खाना रेस्टोरेंट का जो खाना था वो बहुत ही खराब था, बहुत ही घिनौना था. Next one is fluffed. Fluffed means what? You know, फ्लफी. आप फ्लफी हम बोलते हैं फ्लफी पिलो. ओके, सो फ्लफी पिलो मीन्स एकदम फूला हुआ पिलो. ओके, एंड फ्लफ्ड मीन्स टू किसी को आपको फुला देना. ओके, किसी भी चीज को बड़ा बना देना, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लफ्ड. ओके, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई ब्लो when I filled the air in the balloon, it became fluffy. It got fluffed. जब मैंने बलून में हवा भरी तो वो फ्लफी हो गया, वो फ्लफ्ड हो गया. नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब किसी भी चीज का, कोई भी सोच विचार है, उसकी एंडिंग, उसका एंड है, उससे आपने क्या कंक्लूड किया, कोई भी चीज से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल, द कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर वॉज गिवन इन द समरी. इस चैप्टर का जो सारा कंक्लूजन है, उसका जो पूरा सार है, वो समरी में लिखा था. Next one is still. Still means stable. Something which is not moving is called as still. Okay. And also, if you use that, I was still not able to climb the mountains. मैं फिर भी अभी तक भी mountains नहीं चढ़ पाई. That is also called as still. Okay. So still has two meanings. One is still मतलब जो बिल्कुल ना move हो रहा हो. You stay still. एकदम चुपचाप खड़े रहो बिना हिले. And another one is still I could not climb the mountains. मैं अभी भी mountains नहीं चढ़ पाती हूँ. Okay, so there are two stills. Next one is novelty. Novelty means something which is new. Okay, for example, the newly built road, it brought novelty in the colony. एक नई नई रोड बनी थी मेरी कॉलोनी में, और उससे मेरी कॉलोनी में नवीनता आ गई, एकदम नयापन आ गया. Next one is generally. Generally means normally. आमतौर पर क्या होता है, generally ऐसा होता है. Generally the children in the school, they wear uniform. Okay, आमतौर पर जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर वो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं. Okay, so that's called as generally. Next one is gather. Gather means कोई भी चीज इकट्ठा करना. To whenever people are collected, that is called as gathered. Okay, so for example, the students in the school gathered for the prayer. Next one is explain. Explain means what? To describe something. कोई भी चीज को describe करना, explain करना. For example, I described the chapter to the students. मैंने students को chapter explain किया, describe किया, समझाया. Next one is awoke. Awoke means what? उठा हुआ, जगना, उठना. Okay, when someone wakes up, that is called as awoke. For example, I awoke in the morning at 5 in the morning. मैं सुबह morning में 5 बजे उठी. Next one, different. Different means of various types of अलग अलग तरह की कोई चीज होती है, that is called as different. For example, there are different colors in the world.
दुनिया में बहुत तरीके के कलर्स हैं। नेक्स्ट वन इज टर्न्ड। टर्न्ड मीन्स टू टर्न अराउंड। ओके, कोई भी चीज में चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I was 27, but today is my birthday and I turned 28. कल मैं 27 साल की थी, आज मेरा बर्थडे है तो मैं 28 की हो गई, 28 की चेंज हो गई, 28 में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट वन इज कॉजिंग। व्हेन कोई भी चीज को का कारण बनना, दैट इज कॉल्ड एज कॉजिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना इज कॉजिंग सो मेनी डेथ्स। कोरोना की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। कॉजिंग मीन्स घटना किसी की वजह से। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर। ओके, ग्रेट मीन्स लार्ज, ह्यूज, बहुत बड़ा। तो दैट ग्रेटर मीन्स सबसे बड़ा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटर द हाइट ऑफ अ पर्सन, द बेटर इज हिज हेल्थ। किसी पर्सन की हाइट अच्छी है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन इज डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मीन्स कोई वाद विवाद हो जाना, बहस हो जाना, झगड़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स एंड स्टूडेंट हैड अ डिसएग्रीमेंट। टीचर्स और स्टूडेंट का किसी बात को लेके वाद विवाद हो गया, किसी बात को लेके उनके सेम ओपिनियंस नहीं थे दोनों के, तो झगड़ा हो गया। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स व्हेन यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग। जब आपका किसी चीज में आपको कोई चीज पसंद हो, जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज एनालाइज। एनालाइज मीन्स किसी भी चीज का विश्लेषण करना, कोई भी चीज को परखना, जांच परख करना, दैट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एनालाइज द नंबर्स ऑफ कोरोना। कोरोना से कितनी डेथ्स हुई ये मैंने एनालाइज किया, कि फर्स्ट वीक में इतनी डेथ्स हुई, अगले वीक में इतनी डेथ्स हुई, तो आपने जांच परख के एनालाइज किया, दैट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग। नेक्स्ट वन इज रीगेन्ड। ओके, रीगेन मतलब वापस से पा लेना, दैट इज कॉल्ड एज रीगेन। गेन करना मतलब कुछ गेन करना मतलब कुछ पाना, एंड रीगेन मतलब वापस से कोई चीज पा लेना। फॉर एग्जाम्पल, I regained the gray hair in my hair in my head. मैंने अपने बाल अब वापस पा लिए। पहले मेरे बाल उड़ गए थे, अब मैंने बाल वापस रीगेन कर लिए। Next one is evaluate. So evaluate and analyze are very similar. Evaluate also means to examine something. कोई भी चीज का विश्लेषण करना, जांच परख करना. Okay. For example, I by looking at the graphs, I evaluated the number of deaths in this week. ग्राफ्स को देख के मैंने ये जांच परख की, विश्लेषण किया कि कोरोना से कितनी डेथ्स हुई है। नेक्स्ट वन इज नथिंग। मीन्स नथिंग एट ऑल। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज हैपनिंग इन द सिटी। सिटी में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। ओकेजन मीन्स कोई भी अवसर, कोई भी इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे इज अ ग्रेट ओकेजन इन द स्कूल। ओके, रिपब्लिक डे का अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, वी होस्ट द फ्लैग। रिपब्लिक डे के अवसर पर हम झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट वन इज डिबेटेड। डिबेटेड मीन्स डिबेट होना, बहस होना, वाद विवाद होना, दैट इज कॉल्ड एज debated. Okay, the all the students in the debate competition debated with each other. So जो सारे students ने debate competition में आपस में argument किया। Stayed. Stay means to ठहरना, रुकना। Okay, to wait. For example, I stayed at a hotel yesterday. मैंने होटल के अंदर रुकी कल। Next one is brightest. Bright means very shiny and brightest means सबसे ज्यादा shiny होना, सबसे ज्यादा shiny, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली। Okay. For example, Ram is the brightest student in the class. Next one is envy. Envy means जलन होना किसी भी चीज से। For example, I was envy of the new dress which that girl wore. उस लड़की ने जो सुंदर सी ड्रेस पहनी है, मुझे बहुत जलन हुई उससे देख के। Envy means जलन होना, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट वन इज आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स झगड़ना, बहस करना, तर्क देना। ओके, नेक्स्ट वन इज सिली। सिली मीन्स स्टूपिड। ओके, कोई भी चीज, यू आर अ सिली पर्सन।
Next one is argue. Argue is argue. Is argue. Okay. Argue means what? When you have a debate with someone, when you have an argument with someone, आपका किसी से वाद विवाद हो जाए, बहस हो जाए, that is called as argument. Okay. So argued and argue. Argued is the second form of argue. Okay. So, children, that's all for today's lecture. And for the assignment today, you have to learn these vocabulary, okay? And you have to try using them in your daily language, okay? So, the words which you can really use in your daily language, the first one I told you is messy, okay? You have a messy room, आपका room बहुत गंदा है. You have a messy bathroom, आपका bathroom बहुत गंदा है. Okay, so this word you can use in your daily language, okay? Another one is wondering. Okay, wondering मतलब सोचना. I was wondering आज रेस्टोरेंट में खाने चले. I was wondering आज होमवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Okay, so wondering means सोचना. मैं सोच रही थी ऐसा. Okay, I was wondering. Okay, so another word is wondering. Okay, and another word which you can use is occasion. Okay, occasion आप जानते हैं जैसे कि एक occasion था मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी. Okay, so that way you can use these words. Okay, envy also you can use. Envy means मतलब किसी से jealous होना, किसी से ईर्ष्या करना. Okay, for example, यार उसकी घड़ी बहुत सुंदर है. I am so envy of it. Okay, मुझे उससे बहुत jealous हो रही है. Okay, so these are the words you can use. Okay, so okay children, that's all for today's lecture, and we will meet in the next one. Till then, you submit your assignments on Scholars ERP, and we will meet in the next lecture. Okay, thank you so much, and see you in the next one.